अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब ठीक होंगे। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में। एज द नेम सजेस्ट, thermochemistry is a combination of two words, that is therm and chemistry. So we can say that this is a chemical or physical change involving absorption of heat or release of heat in a chemical reaction. थर्मोकेमिस्ट्री में हमारे पास हम उन रिएक्शंस को स्टडी करते हैं जिनमें हीट चेंज आ रही होती है, चाहे वो हीट का गेन हो या हीट का लॉस हो। तो उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। और जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं वो ब्रांच क्या कहलाती है? थर्मोकेमिस्ट्री। जस्ट लाइक दैट फिज़िक्स के अंदर हम चैप्टर पढ़ते हैं थर्मोडाइनेमिक्स। तो वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? थर्म एंड डायनेमिक्स, यानी हीट इन मोशन होती है उस टाइम। सिमिलरली हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे? वो रिएक्शंस पढ़ेंगे जिनमें या तो हीट अब्जॉर्ब हो रही होगी या हीट रिलीज़ हो रही होगी। अब ये जो हीट अब्जॉर्ब होगी या रिलीज़ होगी, इस हीट को हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जब हम मूव करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? थर्मोकेमिकल रिएक्शंस को क्लासीफाई कर देते हैं दो टाइप्स के अंदर। एक होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड द अदर वन इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एज द नेम इंडिकेट, वर्ड एक्सो शो evolve, heat evolve in a reaction is called exothermic reaction. इसमें जो होता है हीट कंटेंट हमारे पास रिएक्टेंट्स की हायर होती है देन प्रोडक्ट्स, क्योंकि जब प्रोडक्ट्स बनते हैं तो रिएक्टेंट उस टाइम हीट रिलीज़ कर चुका होता है। तो ये होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और यूजुअली जब हीट रिलीज़ होती है तो उसे नेगेटिव साइन असाइन किया जाता है। वैसे ही एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है और यूजुअली हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर देन रिएक्टेंट इन सच टाइप ऑफ रिएक्शंस। इनमें क्या होता है कि प्रोडक्ट्स की हीट कंटेंट ज़्यादा होती है रिएक्टेंट से, क्योंकि प्रोडक्ट उस टाइम बनता है जब रिएक्टेंट हीट गेन कर चुका होता है, और वो रिएक्शंस जिनमें हीट गेन हो रही होती है उस टाइम हम पॉजिटिव साइन असाइन करते हैं। नेक्स्ट जब हम मूव करते हैं तो क्या है? मज़ीद इन रिएक्शंस को क्लासीफाई किया गया है टू टाइप्स में। टू सब टाइप्स हैं इनकी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन है जो खुद ब खुद होते हैं, टेक प्लेस ऑन देयर ओन एंड दे आर वेरी फास्ट एंड इरिवर्सिबल, दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड एंड दे carry on their own way rapidly and goes on completion very well. Almost all the natural processes that are taking place in the universe are all spontaneous reactions. We can quote an example of neutralization reaction between acid and base that give rise to salt and water is a general example of spontaneous reaction because it takes place on its own. And the other classification is that non-spontaneous reactions, they do not take place on their own. Generally they are slow type of reactions and almost they never complete, like pumping of water uphill. You cannot force water uphill without any external assistance. You have to provide a large amount of force to carry water uphill. So it is an example of non-spontaneous reaction. नेक्स्ट इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है थर्मोडाइनेमिक्स के अंदर हम क्लासीफाई करते हैं स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस। एज नेम सजेस्ट, स्टेट फंक्शन रिप्रेजेंट state of a system and it depend upon state of a system, that is initial and final state, that in which state reactant and products were present before and after the completion of reaction. But name suggests in path functions that these are the functions that represent on the path followed taken to bring about the change. In a cyclic process, path functions are never zero, but in a state function there is in a cyclic process there is no change in state functions, but there is always a change in path functions, like spontaneous reactions and non-spontaneous reaction it can be. Examples of state functions are change in internal energy, change in entropy, change in volume, change in pressure, up to so on. And in a cyclic process these state functions are zero value.
But examples of path functions, here we can say that heat and work are the path functions in a cyclic process. Change in heat and change in work will never be zero. They have some values. So these are the basic differences in state functions and path functions, and clearly explained now. You can ask me any question if you have related to these topics. Now the question arises that what is the principle of thermochemistry? So thermochemistry is based on first law of thermodynamics. First law of thermodynamics is also called law of conservation of energy. This law states that energy can neither be created nor be destroyed but can be converted into one form to another form. यानी ना हम एनर्जी को पैदा कर सकते हैं ना हम उसे तबाह कर सकते हैं, लेकिन हम एनर्जी की एक फॉर्म को एनर्जी की दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, थर्मोकेमिस्ट्री का प्रिंसिपल है। इसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के डिवाइसेस होते हैं जिनके ज़रिए हम एनर्जी की, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब हम देखते हैं तो हम एनर्जी की एक फॉर्म को कन्वर्ट कर रहे होते हैं अदर फॉर्म में, लेकिन कभी भी एनर्जी को ना हम पैदा कर रहे होते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास है दो फिगर्स आ जाते हैं, एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी। बेसिकली इनको कलेक्टिवली जब हम स्टडी करते हैं दे आर कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन, बट व्हेन इंडिविजुअली दीज बोथ क्लासेस आर स्टडीड it is first is enthalpy and the second one is internal energy. And enthalpy basically represents the heat changes in a chemical reaction at constant pressure. We can say that change in pressure is equal to zero in enthalpy changes. And in internal energy is the total energy of a chemical reaction, and when heat changes in a chemical reaction occur at constant volume then it is called internal energy. And in internal energy change in volume is equal to zero. So it was all about today's lecture. You can ask me any question about this topic in comment box, and kindly subscribe my YouTube channel. If you have not pressed the bell icon, then press to get latest updates about all the topics of chemistry. Thank you very much.